I have some very factual evidences which I collected through my recent visit, just 4 days back, a 3-day visit to the tribal district called Wayanad in Kerala. Sir, I attended 27 meetings, clogging 4 to 5 colonies into one meeting, and in the effect, almost 130 to 40 colonies in Wayanad district. Sir, drinking water, housing, in all these areas. See, I was so astonished, annoyed to have reports reading from the speeches of Solanki ji, being a tribal, how happy he was about the dispersal of the central government in such states from where they come. Netamji also presented reports which were so flowery and fragrant, and which is definitely not happening in Kerala, sir. Sir, Shri Shiv Prasad also had presented some data to effect his contention, saying that the dispersal of the central ministry, tribal ministry, or the budgetary allocations were not dispensed appropriately and timely. But I just want to ask some questions, sir, through you, sir. Sir, Kolattur colony, the first colony that I visited, had around 4 other colonies getting into the meeting, housing around 2,000 members from the tribal community and the localites also. Sir, they did not have drinking water. They raised the issue. I did not have the money to spend from my MP lads funds. I had to spend it from my pocket, a money which is meager. But I had to push in pumps, submersible pumps, pump the water onto a tank which was already there. And the same night I went back, traveling 120 kilometers almost, to that colony again in the wee hours of the night, inaugurating the drinking water project. And again, yesterday, the channel belonging to our left alliance group, Shri Shreyams Kumar, his channel has reported that the Kerala government has rehabilitated Adivasis 12 years back. They are still living in minor hutments which will contain all that water from the first to the last drop of rainwater in their homes. Sir, this is the pathetic, the poignant, the deplorable, lamentable, and sad state of affairs with the tribals in Kerala. Sir, no, please. Sir, through you, sir, if I'm putting it on record, sir, Edamalakudi was picked as the last village in the country in the Prime Minister's Narendra Modi ji's focused action plan for supplying electricity. But it was only the last village, and the last home in that village, or the first home in the village, was the responsibility of the state government. Did they do it or not? Even if I am retiring from politics, my friend Mr. Brittas should come forward with facts or data ruling out my contention. That is my request. And again, Edamalakudi, I had given 12.5 lakhs from my MP lads funds. This is happening again and again. And the collector told me the DFO of Idukki is poking his nose into this, and this money cannot be utilized because it can happen. Maybe after processes, it may happen after 1.5 years. My term is ending this April, sir. So I cannot put that money to be lapsed. So I had to pay again a huge sum, sir. It's 5.7 lakhs from my pocket to have the drinking water drawn from an uphill spring to the Adivasi hamlet. Sir, this is the condition, sir. I have umpteen number of other reasons to prove that
tribal life is not as flowery or budding even, and not at all fragrant as is being projected by. I do believe in their reports. I'm happy over their happiness, but it is not happening for Kerala, sir. And again, when it comes to Wayanad district, the central government, the Nidhi Aayog, did get Wayanad district empaneled into the list of aspirational districts. The government in Kerala, 2018 December, did not want Wayanad to be enlisted. The chief secretary then, I don't want to name him, sir, he said, we do not want Wayanad to be in that list. Me, along with our then alliance partner, Shri PC Thomas, we went on an agitative mood, and then the chief secretary was forced to recall his request and put in place a fresh request for getting Wayanad into the list of aspirational districts. But what after getting listed is a big question, sir. So I request, there are lots of other issues relating to practicing doctors among Adivasis who practice traditional Adivasi Ayurveda. Sir, if I remember right, you were also there. We had the medical amendment bill allowing practicing doctors without MBBS degree to carry on with their medical disbursals. I wish that these practicing Adivasi doctors or Vaidyas be permitted or let to have a living. Otherwise, you'll see them clogging with German patent institutions, taking them in bulk. So, same is the situation in Kannur Aralam, Trichur Peechi, Chalakudi Peringalkuttu. Again, the infant mortality rate is again and again being raised in so many subjects which are brought into discussion relating to Adivasis or women's welfare. So the toxicity which is pushed onto their tongue, they are used to having ragi for their staple food. The ragi cultivation was vast and wide in Adivasi hamlets. The state governments have denied cultivation of ragi and pushed rationing into their guts, which has pushed in toxicity, which has spoiled their uterine system and all reproductive organs. So I have only one request, sir. Please send the tribal commission on a very harsh survey and keep the central government informed of what all enhancements in the form of focus on upliftment of tribal life should be accessed. I am very obedient, sir. You have rung the first bell. I am sitting down. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Dr. Prasant Nandaji. Thank you, Deputy Chairman, sir. In my speech, I would like to attract the attention of Honorable Minister to very many difficulties faced by different states in different schemes. First scheme that I will be discussing is Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub-Plan SCA to SCSP. Under this program, the Ministry of Social Justice and Empowerment has been providing funds for the SCA welfare schemes. After 2012 and 13, the Ministry has been providing less amount of funds in comparison to the funds proposed by the state government to the action plan. Besides, the Ministry releases funds mostly during the third and fourth quarter of the financial year. Hence, the expenditure of the grants get unusually delayed, which in every financial year. During the current financial year, the grants from the Ministry under SCA to SCSP is yet to be received. So next I'll talk about grants for infrastructure development under SCA
to SCSP. The ministry released funds for infrastructure development in SC populated villages up to 2017-18 under SCA to SCSP. But from the financial year 2018-19, no funds has been released by the ministry under SCA to SCSP for infrastructure development. Sir, Ministry is providing funds for infrastructure development in SC populated villages having more than 50% SC in a village which are selected under Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana PMAGY. But for those SC villages which are not included under PMAGY scheme also require necessary funding under SCA to SCSP. Accordingly, Ministry may release funds for infrastructure development under SCA to SCSP. Sir, under Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme, SCA to TSS and Article 275(1). Under this scheme, Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme, SCA to TSS and Article 275(1) of Constitution of India, 100% grants are being received from Ministry of Tribal Affairs, Government of India, for development and welfare of tribal people. It supplements the efforts of state governments for development and welfare of tribal people as an additive to the state tribal sub-plan TSP. Approval of projects and flow of funds under both SCA to TSS and Article 275(1) schemes have receded considerably in the last few financial years, which is a matter of great concern for the state government, since it is greatly affecting the tribal development initiatives in the state. Sir, Ministry of Tribal Affairs has recently changed the scheme from Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme, SCA to TSS, to Special Central Assistance for Tribal Development, SCA for TD. The SCA for TD scheme will aim towards integrated development of tribal dominated villages as model village Adarsh Gram. The revised scheme guidelines will impact different program activities already been initiated under SCA to TSS like Mission Jivika. Release of funds under SCA to TSS and Article 275(1) schemes by Ministry of Tribal Affairs is being linked to the submission of UC's Adigram status against both the schemes. However, provisioning of funds proportionate to the tribal population of the state under SCA to TSS and Article 275(1) is a constitutional entitlement of the tribal communities of the state. In case the funds are not released to the state as per the entitlement, state may not be able to make a prospective plan for holistic development and welfare of tribal people. Ministry of Tribal Affairs shall consider releasing the entire fund to the state as per the entitlement under both these schemes. Sir, I would like to ask, though the government of Odisha have recommended 169 cases for inclusion in the ST list of Odisha and have been submitting clarification and justification for inclusion of each community, why they have not so far been included in the ST list? May I ask to the Honorable Minister through you, sir, is it a fact that Task Force of Ministry of Tribal Affairs in 2014 have recommended for inclusion of 9 communities in the ST list of Odisha? If yes, why the recommended communities have not so far been included in the ST list? For your information, sir, the recommendation of Task Force is Ministry of Tribal Affairs, Government of India had constituted a task force under the chairmanship of Secretary by notification dated 3/2/2014 to examine proposals for inclusion of communities in the state. Sir, the task force examined the proposals for inclusion from various states, including 107 proposals from Odisha, and in its report notified by letter number 12026 dated 3/7/2014 has recommended the following 9 communities of Odisha for inclusion in the state ST list
of the state on priority basis. There, one Kanda Kumbar as subset of Kanda at serial number 31 of ST list of Odisha. 2 Jodia, Jodia, Jadia, Jhadia as a synonym of Jodia Paraja and a subsection of Paraja, Parja, Paraja tribe at serial number 55 of ST list of Odisha. Third is Chuktiya, Bhunjia. The fourth is Sahara as a synonym of Savara, Sahara, Savara tribes at serial number 59 of ST list of Odisha. Sir, in 5, Mankadias should be included as synonym of Mankadias. 6, to include Poroja as phonetic variation and Barang Jodia Poroja, Penga, Poroja, Pengu Poroja, Celia Poroja as sections or subsets of the Poroja, Parja and Parja, serial number 55 of ST list of Odisha. Then 7 is Banda Parja and Bunda Parja should be included in the minor phonetic variations Bando Parja. 8, Durva, Durva and Durva should be included as phonetic variation synonyms of Dharwa and Durva at serial number 17 of ST list of Odisha. And the 9th, Paharia as a subset section of Gond tribes, serial number 22 of the ST list of Odisha with area restriction for Kalahandi, Balangir and Nuapada districts. Till date, no action has been taken for inclusion of these communities in the ST list. Sir, I request the Honorable Minister to definitely respond to all these things which I have placed before him, and that is what is my total speech. Thank you. Thank you, Prashant ji. माननीय श्री विनय विश्वम जी, माननीय विनय विश्वम जी, माननीय श्री जी के वाशन. Thank you, sir. So the government of India at the highest level has taken keen interest in ensuring the development and well-being of the scheduled tribes. Among various initiatives, sir, and welfare schemes from the government of India, inter alia being adding more tribals communities to the list of scheduled tribes. This is in a good intention with a view providing them the benefits of the constitutional guarantee for their socio-economic development, sir. Sir, at this juncture, I would like to remind the Honorable Minister about 2 communities from the state of Tamil Nadu, in respect of which I had already requested for grant of scheduled tribe status and raised the matter in this August House. One of them, sir, is the Badaga community from Nilgiris district in the state of Tamil Nadu. The Badaga, sir, an indigenous community of the Nilgiri district, Tamil Nadu, have been demanding this for the past 70 years, sir, that they be included in the list of scheduled tribes from both central and the state government, sir. The Badaga community has evolved itself as a community with rich cultural traditions over a long period of time, sir. Sir, to be underlined, till 1931 census, the Badagas were classified as important primitive tribes. However, in 1950, sir, the community was deleted from the scheduled tribe list for reasons unknown till today. The other community, sir, which I would urge the Honorable Minister to grant scheduled tribe status, is the Narikurava community. The Narikurava community, sir, which has been migrated from the southern states, from other parts of India, today are in Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Kerala. In those states, sir, they have been included in the scheduled tribe. A bill to this effect, to such inclusion of Narikurava community in the list of scheduled tribes, was introduced in the 15th Lok Sabha, Bill number 160/2013, in the 16th Lok Sabha,
that is Bill number 352, 2016 on 4/10/2017. Unfortunately, sir, both occasions the bill was lapsed. I would like to take this opportunity to once again appeal to the Honorable Minister to grant scheduled tribe status to these important communities so that they can get the benefit guaranteed under the Constitution, besides availing of benefits under various schemes operated by the government for the welfare of the scheduled tribe. Thank you, sir. Thank you. Mr. Sarkar, name list. He is on his seat. माननीय श्री ब्रिजलाल जी। उपसभापति महोदय, जनजातीय मंत्रालय की वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपनी पार्टी का भी बहुत बहुत आभारी हूं। महोदय, जल जीवन जमीन, जल जंगल जमीन आदिवासी जीवन की पहचान है। आदिवासी जीवन जल जमीन जंगल से ही सीधे जुड़ा हुआ है। पूरे देश में आदिवासी कहीं भी हों, वो अधिकतर जंगलों में ही रहे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ उत्तर प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य जिले हैं चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत हो या दक्षिण के राज्य हों, सब जगह आदिवासियों का रहन सहन करीब करीब एक ही प्रकार है। महोदय, उत्तर प्रदेश के चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के अलावा बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज के उत्तरी भाग में भी आदिवासी रहते हैं। आदिवासी खेती करते हैं और उनका जीवन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी निर्भर करता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में तेंदूपत्ता, महुआ, चिरौंजी, जंगली आंवला, सतावरी, शंख पुष्पी, पुनरवा, नागरमोथा, चीड़-गोंद, खैर-गोंद, अर्जुन छाल, गोरख आदि प्रमुख चीज़ें हैं जिसको आदिवासी जंगलों से कलेक्ट करते हैं और उसे स्थानीय स्तर पर बेचते हैं। महोदय, इन भोले भाले आदिवासियों को स्थानीय लोग ठग लेते हैं। वे अपने महंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कीमत भी नहीं जानते। महोदय, मैं जानता हूँ ऐसे केसेस होते थे सोनभद्र में, जहाँ चिरौंजी बहुत पैदा होता है और आज से 4-6 साल पहले आदिवासी 1 किलो चिरौंजी लाता था तो उसे 1 किलो चावल दे करके वापस भेज दिया जाता था। इसी तरह जो जड़ी बूटी है उसकी भी कीमत उनको ठीक से नहीं मिल पाती थी। महोदय, उत्तर प्रदेश में तेंदूपत्ता बहुतायत में मिलता है। इस तेंदूपत्ते पर जहां माफियाओं का कब्जा था, वहां चित्रकूट और बांदा में वहां तेंदूपत्ते के बिजनेस पर माफियाओं के अलावा डकैतों का कब्जा होता था। महोदय, वहां डकैत होता था ददुआ। 300 से ज़्यादा केसेस थे उसके ऊपर, 2 से ज़्यादा मर्डर थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। उसके आशीर्वाद के बिना ठेकेदार ठेका नहीं ले सकता था। ठेकेदार भी कमाई करता था और ठगे जाते थे आदिवासी लोग, क्योंकि आदिवासी ही तेंदूपत्ते का कलेक्शन करते थे। महोदय, इस गठजोड़ में सबसे बड़ा नुकसान इन गरीबों का, दलितों का और आदिवासियों का होता था, क्योंकि उनको अपने मेहनत का उचित पैसा नहीं मिलता था। महोदय, यह बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं होता।
ददुआ तय करता था, यहाँ तक कि वहाँ चुनाव कौन लड़ेगा, संसदीय क्षेत्र पर कौन लड़ेगा, विधायक कौन बनेगा। उसका बेटा निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बना और गांव पंचायत में तो प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद तक वही तय करता था। उसके परिवार के संसद सदस्य भी बने, विधायक भी बने और उस समय बने जब ददुआ 32 साल से फरार था, जिसका आतंक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में था। महोदय, मैं योगी आदित्यनाथ जी को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो डकैतों का, माफियाओं का सफाया किया और उसका सीधा लाभ उन आदिवासियों, गरीबों को मिल रहा है। वहाँ जो सरकारी योजनाएं चलती थीं, बिना इन डकैतों को पैसा दिए हुए वो नहीं चलती थी। और जब पैसा ठेकेदार को जाता था, माफिया और डकैत को जाता था, तो जाहिर है काम कागज पर होते थे और उसका नुकसान सीधे गरीबों को होता था। आज स्थिति बदल गई है और जो सरकारी धन से डकैतों ने, माफियाओं ने संपत्तियां अर्जित की थी, आज उन पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। महोदय, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट में बिजली के संयंत्र बहुत हैं और उससे जहां शहर कस्बे रोशन होते थे, वहीं आदिवासियों की झोपड़ियां अंधेरी रहती थी। आज वो झोपड़ियां पक्के मकानों में बन गई हैं और उनके मकान भी सौभाग्य योजना के अंतर्गत रोशन हो रहे हैं। पक्के मकान है, नल से जल है, शौचालय है, मुफ्त अनाज है। और महोदय, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं भी संकल्प पत्र जो बना था, घोषणा पत्र बना था, उसका मैं उपाध्यक्ष था। महोदय, हम लोगों ने किया कि 2 गैस के सिलेंडर हम होली और दीपावली पर मुफ्त देंगे। अभी होली का त्यौहार है, 2 सिलेंडर लोगों को मुफ्त सिलेंडर दे दिए गए हैं। महोदय, इसके उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। महोदय, अब मैं उनकी जमीनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आदिवासियों की जमीन, जहाँ पीढ़ियों से वो खेती करते थे, उनको नहीं मालूम था, वो जानते थे उनकी ज़मीनें हैं, लेकिन वो ज़मीन उनके नाम नहीं। वहाँ के जो सत्ताधीन लोग थे, जो 1947 से 1989 तक वहाँ सत्तासीन थे, वो उन ज़मीनों को सोसाइटी बनाकर, तमाम बनाकर उसको कब्जा कर लेते थे। और उसी के सिलसिले में महोदय एक घटना हुई थी 17 जुलाई 2019 को, उम्भा कांड। उम्भा कांड में गरीबों की ज़मीनों पर, आदिवासियों की ज़मीन पर दबन लोग कब्जा कर रहे थे। जब आदिवासियों ने विरोध किया तो 11 आदिवासियों की हत्याएं की गई थी। महोदय, ये घटना तात्कालिक नहीं थी, इसके बीज 1954 में बो दिए गए थे। उस समय जो सत्तासीन पार्टी थी, उनके लोगों ने वहाँ की काफ़ी ज़मीन, जो 500 एकड़ से ज़्यादा थी, उस पर सोसाइटी बना करके कब्जा कर लिया था। 17/12/1955 के पहले यह ज़मीन किसी के नाम नहीं थी। यह ग्राम समाज जंगल विभाग के खाते में दर्ज थी। रॉबर्ट्सगंज मिर्जापुर के तत्कालीन तहसीलदार के आदेश पर 435 एकड़ ज़मीन एक सोसाइटी के नाम दर्ज कर दी गई। सोसाइटी ने एक साजिश करके एक पेपर करेक्शन का मुकदमा दायर किया और 7 सितंबर 1989 को वहाँ के रेवेन्यू कोर्ट ने 435 एकड़ में से 150 बीघा ज़मीन आशा मिश्रा और विनीता मिश्रा के नाम कर दिया। वो ज़मीन थी जिस पर आदिवासी पीढ़ियों से खेती कर रहे थे। जब वो ज़मीन उनके नाम आ गई तो उन्होंने धीरे से 2017 में वो ज़मीन वहाँ के गांव प्रधान और उसके 15 लोगों को बेच दी और उसको खाली कराने के सिलसिले में जब ज़बरदस्ती की गई, आदिवासियों ने विरोध किया तो उनकी हत्या की गई। महोदय, इस तरह से आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता रहा। ये महोदय आज की बात नहीं है। वहाँ पर 80 के दशक की शुरुआत में एक सतिया कांड हुआ था। एक मुख्यमंत्री जी थे उस समय,
उनके पुत्र ने इसी तरह से फार्म हाउस बनाया था गोपालपुर मड़िहान मिर्जापुर में। महोदय, वहाँ आदिवासी लड़कियों का शोषण होता था और उसी में एक आदिवासी लड़की का शोषण हुआ, उसकी हत्या की गई, जो उस समय पूरे देश में अखबारों की सुर्खियां बनी थी सत्याकांड के नाम से। तो ये जमीनें जो कब्जा होती थी, मैं फिर योगी आदित्यनाथ जी ने उम्भा कांड के बाद एक उच्च स्तरीय समिति बनाई और जब वो समिति खाली उम्भा कांड नहीं, जितने उस क्षेत्र में जांच की गई तो पाया गया कि हजारों एकड़ जमीनें सोसाइटी बना करके कब्जा की गई थी जो आदिवासियों की थी। आज ये जो पुराने पाप थे उसको योगी आदित्यनाथ जी ने धो दिया है और आज वो जमीनें निकली हैं, वो आज आदिवासियों को दी जा रही हैं, जिससे मैं इस सदन के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, एक इशू बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको मैं आज सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। महोदय, 1990 में जनता दल की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में और वहाँ एक प्रपोजल भेजा गया था 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का, लेकिन वो केंद्र से नहीं होना था, नहीं हुआ। लेकिन उस समय दबाव डाल करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, वहाँ ओबीसी के मैं जातियों का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन 3 जातियों को जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाने लगा। जबरदस्ती, भारत सरकार से नहीं हुआ था। फिर वो कालांतर में अपने को गोंड और खरवार लिखने लगे। महोदय, गोंड खरवार जातियां ये केवल चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में हैं और कहीं नहीं है, आदिवासी हैं, वनवासी हैं। जब वही पार्टी जनता समाजवादी पार्टी के रूप में सरकार में आती है तो वो फर्जी गोंड और खरवार असली गोंड खरवार आदिवासी बना दिए गए, ट्राइबल बना दिए गए। और महोदय, जब भर्ती निकलती थी, चूंकि एसटी का मेरिट नीचे जाता है, तो फर्जी गोंड खरवार बने, एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपी हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए। 2018-19 में एसटी कमीशन का चेयरमैन था। मैंने इस इशू को लिया और ऐसे मुझे कई लोग मिले जिन पर कार्रवाई मैंने इनिशिएट किया, जिसमें एक डिप्टी एसपी जो फर्जी सर्टिफिकेट से बना था उसको बर्खास्त किया गया। महोदय, ये कार्रवाई बस 1 मिनट और लूंगा। तो महोदय, ये बड़ा गंभीर मामला है। एक सरकार की गलती के कारण, जानबूझ करके गलती के कारण, जो असली गोंड खरवार वहाँ के हैं वो अपने अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं। आज वो किसी कंपटीशन में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो फर्जी ओबीसी जातियाँ आदिवासी बन गई, ट्राइबल बन गई, उनके सामने वो कम्पीट नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग, अधिकारिता मंत्रालय और एसटी कमीशन करता हूं, इसकी एक बृहद जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो असली गोंड खरवार, कोल, पनिका हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा महोदय, वो हमेशा हमेशा के लिए अपने अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री अमर पटनायक जी। Sir, overall, I would like to place on record the fact that the allocation to the Ministry of Tribal Affairs has always increased over a period of time. However, the absorption capacity, that is the capacity to spend, has not matched up to the allocations made. The revised estimates has invariably been less than the budget estimates. So the biggest problem in the strategy for tribal development by the Tribal Affairs Ministry, I think traditionally has been on 3 counts. I call it as the CIA. It's not the American intelligence agency. C for convergence, lack of convergence. I, lack of institutional championship. And number 3, lack of awareness. In fact, the convergence which is supposed to take place between various schemes of government is lacking in the tribal pockets, even though a number of schemes have been introduced, and even a number of schemes have been introduced in the current budget allocation. For example, very futuristic venture capital fund. I think these are very good initiatives, but they will not take place unless there is a convergence established. And this convergence can be established only if there is an institutional champion.
There is lack of championship. If you leave it to government officials alone, this is not going to happen. You need to have community motivators or community champions. You have to groom them up, and they are the ones who will bring about convergence. The third aspect, which is awareness. In fact, sir, I was very disappointed to see the observation of the Standing Committee report of 2020, which says that even various MPs and MLAs were not aware about the schemes in place for STs in India. This is a very sad state of affairs. We need to make the people, the tribal people, aware so that they participate in the schemes that is meant for them. Unless that is achieved, the development will not take place. Lastly, sir, I would like to state that the Eklavya Model Residential School is a very good initiative. Unfortunately, even though more number of schools have been planned in the current budget allocation, the operationalization of these schools is lacking to the extent that we expected. For example, in the last 23 years, only 285 Eklavya model schools could be made functional. In Orissa, for example, only 19 out of 70 sanctioned Eklavya model schools are operational. I would request through the chair to the Honorable Minister that there is a need to make these Eklavya model schools functional, operational, and tech-savvy. I get a lot of requests from various people to give digital assets to these people so that the monitoring of these schools can be made properly to the principals, to the hostel mates. मिशन मोड में काम करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मात्र 608 किलोमीटर होता था पर ईयर 2009 से 14 में, 14 से 19 में ये 3,440 किलोमीटर पर ईयर होने लगा। सुनो अजीर बाबू, सुनिए तो आपको मैं सारे नंबर्स आपको दे रहा हूं, आपको 9 से 14 का नंबर दे रहा हूं, उसके कंपैरिजन में दे रहा हूं। अध्यक्ष जी 31 मार्च तक, सुनो तो अध्यक्ष जी 31 मार्च तक, मंत्री से क्या हुआ वही पूछो। अध्यक्ष जी इस वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 50,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके कारण रेलवे की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, देश का पोल्यूशन का मामला विशेष सुलझता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगले साल का टारगेट लिया है 6,500 किलोमीटर, और पूरी मेहनत करेंगे इस टारगेट को पूरा करने के लिए। बैठो 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 दादा, बैठो दादा। जाफर शरीफ साहब के टाइम से रेलवे का इतिहास मैं आपको बता सकता हूं। बैठेंगे। सुनो, आपके पीरियड, ये रेल राज्य मंत्री थे साहब। दादा मुंह मत खुलवाओ, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय जब रेल राज्य मंत्री थे तब का इतिहास भी बता सकते। माननीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी देश के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, और बहुत ही वहां के लोगों के, भाइयों और बहनों के, हमारे लोगों के सबके एस्पिरेशंस का प्रश्न था। उस एस्पिरेशंस के प्रश्न पर भी यूपीए सरकार के 2009 से 14 के पीरियड में मात्र 2,122 करोड़ खर्च होता था। अध्यक्ष जी 5,531 यानी 2.5 गुना बढ़ाया मोदी जी ने आते ही, और इस साल 22-23 में 9,970 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन है। और इसके लिए काम किस तरह से तेजी से हो रहा है सबको दिख रहा है। जो भी आप सब जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, गोगोई साहब वगैरह, सभी आप जानते हैं कि वाकई किस स्पीड से काम हो रहा है वहां पे। अध्यक्ष जी अगर उसको संख्या में देखें, कमीशन 9 से 14 में 67 किलोमीटर होता था केवल, अब 194 किलोमीटर पर ईयर होता है, 3 गुने से ज्यादा बढ़ के। अध्यक्ष जी फ्रेट कॉरिडोर देश के लिए अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, आपके समय में शुरू हुआ था। आप केवल एक रहता था कि ढिंढोरा पीट दिया, पत्थर डाल दिए, काम करने की बात अलग थी। काम हमारे टाइम में हुआ, काम मोदी जी के आने। अध्यक्ष जी 9 से 14 में कितने किलोमीटर कमीशन हुए? कितने किलोमीटर कमीशन हुए? अध्यक्ष जी कितने किलोमीटर कमीशन हुए?
अध्यक्ष जी, मात्र शून्य अध्यक्ष जी, 9 से 14 में 0 किलोमीटर। और अध्यक्ष जी, मोदी जी ने आने के बाद में 1010 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट कर चुके हैं। 1010 किलोमीटर। ये होता है काम। ये सुनिए दादा अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आंकड़े दे रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी करा दो सर, आपके बार माननीय मंत्री जी 55 साल का आंकड़ा बताना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सारे आंकड़े और दे सकता हूँ, मैं और आंकड़े और नहीं दूंगा। अध्यक्ष जी, मैं बहुत और आंकड़े दे सकता हूँ। आरयूबी हो 763 होता था, उसकी जगह 1258। इलेक्ट्रिक लोको प्रोडक्शन मात्र 246 होता था, आज इस बार का टारगेट है 685 और एवरेज 473 रहा। एलएचबी कोच का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा, 372 था, 1986। कई सारी चीजें हैं। अध्यक्ष जी, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ये एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं। जो कहते हैं माननीय सुरेश जी, कल ओपनिंग आपका स्पीच था, आप कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा